Good morning, children. Welcome back to your business study online class. And today we will be taking a new topic from your chapter number 11, that will be marketing management philosophy. Now, what basically the word philosophy it is? Philosophy basically say that what kind of thinking we are using in organization for the purpose of marketing, which guide the effort of any organizations. राइट इट मीन्स मार्केटिंग प्रोसेस में किस तरह की थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्रेन्योर यूज़ कर रहा है, मार्केटर यूज़ कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और मार्केटिंग के एफर्ट्स को यूज़ करने के लिए. राइट, सो बेसिकली we can say that in order to achieve desired exchange outcome with the target market, एक मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू हैव exchange between the two people, and these two people are who? The buyer and the seller. Now this exchange should be a desired exchange, or it should achieve the target market, right? Now for this it is very important to decide that what kind of philosophy or what kind of thinking should guide the marketing efforts of any organizations, so that the organization objective of profit maximization can be achieved. So today we are going to discuss about the different philosophy into a marketing management, यानी marketing management में कौन कौन सी philosophy use होती हैं. So every entrepreneur has their own philosophies into marketing, and the first philosophy we will be discussing today is the production concept. According to the production concept philosophy, the organization and the marketer who use the production concept philosophy, they have the main target of producing more and more, right? So the main objective here is, the main center point here is, for getting profit maximization, their main objective is to produce much. इट मीन्स इनका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये उसे किस थिंकिंग से अचीव करते हैं? प्रोडक्शन को इंक्रीज करके. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फिलॉसफी. Now, in earlier day of industrial revolution, the demand for industrial goods started picking up, but the number of producers were limited. We are talking about the earlier time where we basically have the monopoly kind of system. There was a perfect market situation nahi thi for a particular good. We have less number of producer, but the demand was high, right? इसकी वजह से क्या हुआ? द डिमांड एक्सीड द सप्लाई, यानी सप्लाई हमारी क्या होगी? शॉर्टेज होगी और डिमांड हमारी एक्सीड हो गई थी. Now selling was no problem. Anybody who could produce the goods was able to sell. Now because the supply is less and the demand is more, in that situation of market, what happened? Any producer who produced the good, that good will be automatically sold, राइट? क्यों? क्योंकि गुड जो क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस हुए हैं वो कम हुए हैं और उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है. तो जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, राइट, और सप्लाई कम हो रही गुड्स की, तो जितना भी गुड्स प्रोडक्ट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, वो गुड क्या हो जाएगा? सोल्ड हो जाएगा. So the focus of business activity was therefore on production of good. It was believed that profit could be maximized by producing at a large scale, thereby reducing the average cost of production. It was also assumed that the consumer will favor those products which were widely available at affordable prices. So the availability and affordability of the product were considered to be the key to the success of the firm. Therefore, the greater emphasis was placed on improving the production and distribution efficiency of a firm. Now because that time we basically having a monopoly kind of system in the market, and there was less producer for the goods and the demand was increasing that time, right? जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई, आप गुड्स का सप्लाई कम कर पा रहे हो, राइट? क्योंकि इतने प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया ही नहीं है. सो दैट वाज द सिचुएशन वेयर द पीपल और द मार्केटर हैज़ अ फिलॉसफी. मार्केटर ने ये फिलॉसफी यूज़ करी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दैट एज मच एंड मच आई कैन प्रोड्यूस, आई विल बी प्रोड्यूसिंग, बिकॉज द डिमांड एक्सीड हो रही है, राइट? सप्लाई शॉर्टेज आ रही है आपकी, वो गुड्स ऑटोमेटिकली मार्केट में सोल्ड हो जाएगा. एंड इन दैट मैनर देयर विल बी वन मोर एडवांटेज. जो आपकी एवरेज कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, जब आप बल्क में प्रोड्यूस करते हैं कोई भी गुड्स को, तो एवरेज कॉस्ट जो होती है उस गुड्स के प्रोडक्शन की, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, right? So here what basically is happening here, according to the production concept or according to the production philosophy, जो profit maximization एक objective हो रहा है, how we are achieving that objective? The main way of achieving that objective is that there should be wider amount of product quantity available with the firm,
एंड द प्राइजेस शुड बी अफोर्डेबल, प्राइजेस यानी कम होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए, जिससे कंज्यूमर क्या कर सके, पे कर सके. और दिस बेसिकली प्रोडक्शन आप फैसिलिटी और प्रोडक्शन फिलोसफी बेसिकली give main center important point or main center to the more and more production. So in that case what will happen, the supply can be adjusted according to the demand in the market, and even the average cost of production can also be reduced, right? So आपको सिर्फ इतना समझना है that production concept क्या है. production concept philosophy marketing की बताती है कि जहाँ पे जो profit maximization objective है business का, firm का, उसको अचीव करने के लिए हमारा मेन सेंटर पॉइंट क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, ताकि एवरेज कॉस्ट भी उसकी डाउन हो, और जो सप्लाई मार्केट में शॉर्टेज हो रही है और डिमांड एक्सीड हो रही है, उन दोनों के बीच में हम बैलेंस कर सकें, राइट. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन सेंटर पॉइंट है मोर एंड मोर प्रोडक्शन. नाउ नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. नाउ दिस वॉज द सेकेंड फिलॉसफी विच केम आफ्टर द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद में जो सेकेंड फिलॉसफी आई वो थी आपकी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फॉर दिस वी नीड टू गो लिटिल बिट इन द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा था, दैट the position of supply increase over period of time. It means production concept में when we have more demand and we have less supply in the market, and suddenly every firm has started producing more product by keeping in mind कि because डिमांड ज़्यादा है तो वो जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सोल्ड हो जाएगा. सो इसकी वजह से क्या हुआ, दैट द पोजीशन ऑफ सप्लाई इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑटोमेटिकली जब हर किसी ने अपना मेन सेंट्रलाइज पॉइंट प्रोडक्शन को रख लिया, सडनली क्या हो गया, जो सप्लाई थी वो क्या होगी, सडनली इंक्रीज होगी, जो कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में नहीं थी, राइट. सो व्हाट बेसिकली हैपन आफ्टर दैट, availability and low price of the product could not ensure increased sale and as such as the survival and growth of the firm. Thus with the increase in the supply of the product, customers started looking for a product which were superior in quality, performance and feature. Now in case of production concept, the main way by which we are getting profit maximization into a business is by producing more and more product, right? Why? Because the organization firm knows that the demand is more and the supply is less. No matter what kind of quality it will be, उसकी क्या प्रोडक्ट है, क्या फीचर है, क्या प्राइजेस हैं और क्या उसकी क्वालिटीज़ है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा बिकॉज उसकी डिमांड है और सप्लाई कम है प्रोडक्ट की. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फिलॉसफी ने किसको मेन सेंटर पॉइंट रखा है, ज़्यादा प्रोडक्शन को और लार्ज अमाउंट और बल्क अमाउंट में प्रोडक्शन को, राइट. बट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, नाउ बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन टू द मार्केट, द सप्लाई वॉज इंक्रीज, सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट. नाउ द पीपल मीन्स द कस्टमर हु हैज़ देयर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट, जिनको पहले प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था बिकॉज सप्लाई शॉर्टेज थी, लेकिन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद में प्रोडक्ट एक लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हो गया था बिकॉज लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था. Now what the consumer, instead of going through with the availability of product or the low prices, now they have shifted their choice from this to what, to the quality, to the feature and to the performance of the product. यानी जिस कंज्यूमर की डिमांड सिर्फ पहले प्रोडक्शन की थी, सिर्फ प्रोडक्ट की थी, अब उसकी डिमांड बिकॉज उसके पास में अब बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए, अब प्रोडक्ट के सप्लाई में कोई वो नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, देर आर लॉट और काइंड ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन टू द मार्केट. सो अर्लियर विच हिज मेन ऑब्जेक्टिव वॉज ओनली टू अचीव द प्रोडक्ट, नाउ हिज ऑब्जेक्टिव वॉज शिफ्टेड फ्रॉम ओनली टू अचीव द प्रोजेक्ट. अब ऑब्जेक्ट को और प्रोडक्ट को ढूंढने के अलावा, परचेज करने के अलावा उसका मेन फोकस किस पे चला गया, that he will be purchasing that kind of product which will have good quality, which will have superior in quality, whose performance is better and which will have a better kind of features, right. So emphasizes कहाँ shift हो गया firm का, now the emphasizes of the firm shifted from quantity of production to quality of product. प्रोडक्शन में क्या था, मोर एंड मोर क्वांटिटी प्रोड्यूस करना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, तो दैट टाइम emphasizes was to the quantity of production. Now in product concept, because now customer is asking for the quality, customer is asking about the performance, it is asking about the product feature, so the emphasizes of this philosophy has shifted the quantity philosophy or quantity of production to quality of
product, right? So the business or the firm now need to change or to continue, they need to improve their quality of the product if they want to get the profit maximization objective of a firm under the concept of product orientation. Now, this was the second philosophy. Now, after that, the third philosophy came, which was called as the selling concept philosophy. According to the selling concept philosophy, that like time to time the technology has been upgraded, the things has been changed, the environment has completely changed due to the internal and the external factor. So what happened, the increase in the sale of business further improve the position with the respect to supply of good, resulting in increased competition among seller. The product quality and availability did not ensure the survival and growth of firm because of the large number of sellers selling quality product. Right, now see, in the production concept, we are going to, all the firms has the main objective, main emphasizes of producing large amount of product और उसी के थ्रू वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी और सप्लाई प्रोडक्ट की क्या थी, शॉर्टेज थी. लेटर ऑन द फिलॉसफी हैज चेंज्ड, मार्केट में जो एम्फसाइजेस है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया. इंस्टेड ऑफ going through a large amount of quantity, now it has shifted from a quality of product, that is called as product philosophy. Now again, when we have lot of consumer who has demanded a good quality of product, into a product philosophy, the producer has started producing a good quality of product and good features and good performance of product. So again, the demand of a consumer or the emphasis of market has been changed, because most of the producer are producing good quality of product, they are improving their product, there is no shortage in the market regarding the product. So the product quality and availability did not ensure that the survival and growth of firm because of the large number of sellers selling the quality product. It means now if the organization of firm will be only thinking about the availability of product, यानी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के बारे में सिर्फ सोचेंगे और लार्ज अमाउंट के बारे में, प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल होना चाहिए, और दे विल थिंक अबाउट ओनली दैट आई हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो इन दो फीचर्स के साथ में वो मार्केट में लॉन्ग टर्म तक और लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देर आर मेनी प्रोड्यूसर इन टू द मार्केट, दोज हु आर प्रोड्यूसिंग the product into a large manner, into a bulk manner, and those who are producing the product into a qualified manner also. Now what need to be changed here, what need to be added here? So that will be that if the producer want to get the profit maximization objective, then with the availability of the product, with the good quality product, now they need to understand that the philosophy has to be changed. Now it need to understand by the organization, by the firm, that it is supposed to be a marketing concept now, where they need to inform about the customer that what kind of features their product have and why they should go through with the purchasing of this product. So basically this is a situation where the firm need to come forward, this is a situation where the firm need to come forward, they need to explain it to the customer, they need to advertise their product, they need to promote their product, they need to communicate about their product to the consumer, and so that the consumer will come and purchase their product. So there are lots, or there are many kind of promotional technique which was used by the seller, by the producer, for the purpose of increasing their product selling, and that was like advertisement, like personal selling, like sell promotions. So these all are just a way by which the selling of the product can be increased. Now the main concept here is that what was the focus in this philosophy, इस philosophy में focus क्या था? So according to the this philosophy, इस philosophy की अगर हम बात करते हैं, that was the selling philosophy. According to this philosophy, the focus of business firm shifted to pushing the sell of product through aggressive selling technique with a view to pursue lure or coax the buyer to buy the product. It means like जो आपका प्रोडक्शन philosophy जो थी, उसका जो मेन फोकस था, इट वॉज प्रोड्यूसिंग मोर गुड, राइट, सो दैट कि मार्केट में जो डिमांड आपकी एक्सीड हो रही है, सप्लाई शॉर्ट हो रहा है, उसको बैलेंस किया जा सके और उसके थ्रू हम प्रॉफिट अर्न कर सकें. द सेकेंड फिलॉसफी वॉज योर प्रोडक्ट फिलॉसफी, whose main focus was to provide or to produce a good quality of product to the consumer, because there was lot of producer
who are there in the market, right? Now this or your selling philosophy or selling concept of marketing philosophy say now the focus of business firm has been shifted for pushing the sell of product, यानी अब सिर्फ प्रोडक्शन ही लार्ज अमाउंट में नहीं करना है या फिर गुड क्वालिटी होने से ही प्रोडक्ट सोल्ड नहीं होगा। यहाँ पे जो मेन फोकस था वो क्या था, दैट गुड क्वालिटी के साथ साथ में अब आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए एक एग्रेसिव नेचर की आपको एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी। यू नीड टू गो थ्रू विद द सेलिंग टेक्निक नाउ, राइट? एंड हाउ इट विल बी पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल बाय यूजिंग द प्रमोशनल टेक्निक। आपको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, आपको पर्सनल सेलिंग करानी पड़ेगी। वी नीड टू गो थ्रू विद द सेल प्रमोशन, we need to go through with the publicity. So this all is what, these all are basically where we are trying to increase the selling of our product by going through with the process of advertising, right? Next is the marketing concept. Now this is the fourth philosophy of your marketing. Now this basically say the marketing concept or marketing philosophy basically say that marketing orientation imply that the focus on satisfaction of customer need is the key to the success of any organization in the market. Now this basically say that as we have the three philosophy which we have already done before marketing concept, where the main focus was in the production philosophy was producing more large amount of product for achieving the profit maximization objective. In the second philosophy, that was the product philosophy, the main focus was producing a good quality of product for achieving the profit maximization objective of firm. And the third philosophy, the selling philosophy, was to go through or to push out or to boost out the selling, and this is only possible by the help of using promotion of your goods or using promotional tools, right? Like advertisement, like direct sell karke, like publicity and other way also. Now after that the fourth philosophy of marketing management came, and that was called as the marketing concept, means the marketing philosophy. According to this philosophy, the main focus of the producer or main focus in the market by a business firm to achieve its profit maximization objective will be to satisfy the customer, and this will be a main key of getting success from any organization into the market. Now they can do, now here according to the marketing concept, now the producer has to do anything by which the consumer will be satisfied. Now if the firm or organization want to run into a market for a long period of time, so they have to achieve this objective of this objective means basically means what, getting success by the help of satisfying the consumer, right? So this is the only main way or main focus for achieving the maximization of profit. Now how they will be able to satisfy the consumer into the market? Now for this they need to identify the need of a present consumer or the future consumer. Now they need to satisfy these needs, whatever needs are coming, and these need has to be satisfied in an effective manner, means on time the consumer need should be satisfied. Now for this a firm need to take out lots of decision. They need to think from the point of view of a customer, or we can say that a customer satisfaction become the focus point of all decision making in the organization, यानी organization और firm में जितने भी decision लिए जाएंगे, if they are following the marketing concept or marketing philosophy, तो उन डिसीजन में जो मेन पॉइंट और फोकस पॉइंट होगा वो क्या होगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन करना, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल व्हाट प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस, यानी किस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, फॉर दैट दे विल गो एंड दे विल एनालाइज द मार्केट that what kind of product demand is there from the consumer side, what will be the features, उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होंगे, what price will be there, how it will be sold, where it shall be sold, when or where it should be available. So these all things will be decided after going through with the information from the customer side or customer feedback only. Now so this basically say that organization is going to produce that kind of product which a consumer is demanding into the market. So here what is basically happening here, so basically the main focus or the main thing here is to satisfy the consumer into a market for getting the objective of profit maximization, right? Now if we sum up the marketing concept
अगर हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग फिलॉसफी की बात करते हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस है feature also, like identification of market or customer who are chosen as the target of marketing effort. Now the first thing, because if you want to satisfy your consumer, so सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंज्यूमर को और क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आई हैव एक्सप्लेन दिस दैट इन द ट्रेडिशनल टाइम व्हेन वी से अबाउट द वर्ड मार्केट, it was restricted to the location only, a place only where exchange is done, right? But in the modern time, the market word is basically our consumer also. It is used for the purpose of all those consumer who want to engage into an exchange process and who also have the capabilities. So that is the reason सबसे पहला वर्क क्या होगा यहाँ पे, आपको मार्केट को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी आपको अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. दैट विल बी द फर्स्ट वर्क विच इज सपोज टू बी डन इन टू योर मार्केटिंग philosophy. Now the second work will be understanding the need and want of a customer in the target market. Now according to your target market, जो आपने एक टारगेट मार्केट रखा हुआ है, कितने कस्टमर को आपको अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करना है, then according to that you need to understand कि what kind of need and want is there in the customer, यानी कस्टमर को क्या नीड है और उसकी क्या डिमांड है. You have to understand that, right, into a marketing concept or marketing philosophy. Third, say development of product or service for satisfying need of the target market. Now whatever development or whatever production you are going to do for the product, after understanding their need and want, आपको उस प्रोडक्ट को डेवलप करना है कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए. Satisfying need of target market better than the competitors. Now because this is a time of cutthroat competition into a market where for a same product there are lot of kind of producer available in the market, right? So what basically you need to do if you want to satisfy a consumer, we need to satisfy their need इन बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स कैन डू, राइट? यानी जो आपके कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उनसे ज़्यादा बेटरली हमें कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाइड करना है. देन ओनली दे विल कम एंड रिपीट दे parcel. Next is doing all this at a profit. Now this is very important, like we are talking about the philosophy of marketing management here. Marketing management में आपका फोकस चेंज हो रहा है पांचों की पांचों फिलॉसफी में, राइट? लाइक प्रोडक्शन में फोकस था लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना, प्रोडक्ट our focus was to produce a qualified good. Then your selling, our focus was to sell the good by going through with a lot of promotional tool, right? Then in your marketing we have a focus on satisfying the consumer. But why we have all these focus, what is the main objective of these all focus is to achieve the profit maximization. So that is what is written here कि आप consumer को satisfy करने के लिए we will do all those things, but we have to keep in mind that all these things result should be the profit of a firm, right? So basically according to the marketing philosophy of management, it say that the focus of marketing concept is on customer need and customer satisfaction become the means to achieve the firm objective of profit maximization. यानी जो फोकस था हमारा मार्केटिंग फिलॉसफी का, उसका क्या था, कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करना और उसकी नीड को सेटिस्फाई करना. एंड दिस इज द ओनली वे बाय विच वी विल बी अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इनटू द फर्म, right? Now the next philosophy was your societal marketing philosophy or societal marketing concept. Now this concept basically say that it is not necessary that we need to satisfy all the need of consumer, even those need also which are not for the welfare of society, right? For example, I can say there will be certain consumer who will need cigarette packet, right? But do we feel that we have to satisfy all those needs? No, we should not, because this is something which is not going to give a benefit to the consumer. So in the fourth concept of philosophy, where we are only thinking about satisfying the need of consumer, no matter कि कंज्यूमर की नीड सही है या गलत है, हमें वहाँ पे सिर्फ उस नीड को सेटिस्फाई करना था और अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना था. बट देन द नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉबैक, इस ड्रॉबैक की वजह से कि गलत नीड भी सेटिस्फाई हो रही थी कंज्यूमर की, जो कि लॉन्ग टर्म में क्या करने वाली थी, हमें लॉस देने वाली थी, राइट? सो द अनदर फिलॉसफी हैज़ केम इनटू अ मार्केट एंड दैट फिलॉसफी वाज कॉल्ड एज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी. नाउ दिस फिलॉसफी से पहले, why this philosophy has came, what was the drawback of marketing concept philosophy, let's see.
as described in the preceding section, cannot be considered as adequate if we look at the challenges posed by social problems like environmental pollution, deforestation, shortage of resources, population exploitation, and inflation. It is so because any activity which satisfies human need but it's detrimental to the interests of society at a large cannot be justified. It means if we are going through with a marketing concept, and according to the concept or according to that philosophy, what we have done is that the main focus point should be the satisfaction of consumer need, but we need to keep in mind that we cannot go through with that in a large manner of welfare, because there are certain activity which satisfy the human need or consumer need but that is detrimental to the interest of society for a large, right? यानी कुछ need और कुछ need और कुछ want human के ऐसे होते हैं that विच कैन सेटिस्फाई, जैसे हम ह्यूमन नीड को हम कुछ एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी होती हैं जिनको हम सेटिस्फाइड करने के लिए, ह्यूमन के कुछ एक्टिविटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर को हैज़ टू गो थ्रू विद दोज वर्क और दोज एक्टिविटी जो कि सोसाइटी के लिए क्या होती हैं, गुड नहीं होती. लाइक if a consumer has certain need in a village area, for that a producer think to make a big industry over there by going through with a deforestation process, by polluting the environment, or by using a resources which is already shortage for the economy, right? So what is going to happen, we are satisfying the human need but जिस तरह से कर रहे हैं, the activity which we are doing for satisfying the consumer need, that is not going to give a welfare for the society for a large period of time. So आप society points उसको justify नहीं कर सकते हैं. So this basically say that if we go through with only marketing philosophy, अगर हम marketing philosophy पे जाते हैं where the main objective is to satisfy the consumer need, it means the firm is short-sighted over there. Serving only the consumer need is not enough. We need to serve for the social welfare also, because this is basically where you will be getting long term of your objective, right? So here the societal marketing concept hold that the task of any organization is to identify the need and want of the target market and deliver the desired satisfaction in an effective and efficient manner, so that the long term well-being of consumer and the society is taken care of. Thus the societal marketing concept is the extension of marketing concept as supplemented by the concern for the long term welfare of the society, right? So it's basically say that societal marketing concept क्या है, it is an extension of marketing concept, यानी marketing concept को ही एक extend किया गया था, update किया गया था और societal marketing concept philosophy लेके आया गया था. According to this philosophy, that it is the duty of a firm or organization to satisfy the consumer need. कंज्यूमर नीड को सेटिस्फाई करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, बट दिस दे नीड टू डू इन अ वे ऑफ इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर, सो दैट द लॉन्ग टर्म वेलबींग ऑफ कंज्यूमर कैन बी और सोसाइटी कैन बी टेकन केयर. यानी कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उनको एक एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में वर्क करना था, ताकि सोसाइटी का भी वहाँ पे वेलफेयर हो सके और सोसाइटी को कोई विड्रॉन और ड्रॉज और लिमिटेशन ना देखनी पड़े, राइट? सो जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली जस्ट ए एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ये एक्सटेंशन है और एज अ सप्लीमेंट आया है ये, जहाँ पे हम with satisfying the consumer need we are also thinking about the long term welfare of the society. यानी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के अलावा भी we are also paying the ethical and ecological aspect of marketing, so that the social welfare thing can also work out. Now these are all about the different kind of philosophy, different kind of thinking which a business firm use into a marketing management process, right? Now next we are going to discuss about the function of marketing, right? Now as I told you, the main function of marketing is what? Marketing में हम कर क्या रहे हैं? Marketing is basically concerned with exchanging of goods and services. और कहाँ से कहाँ? We are exchanging these goods and services from producer to consumer, right? Now we have to exchange these goods and services in such a way that we can maximize the satisfaction of customer need. यानी हम जो मार्केटिंग में जो एक गुड मार्केटिंग जो होती है, where we try to exchange the goods and services from producer to consumer or from seller to buyer, we need to do it in such a way that we will be able to satisfy the consumer need.
राइट नाउ फॉर द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग फंक्शन और एक्सचेंजिंग करने के लिए गुड्स को we need to go through with lots of function and lots of activities are involved over there. Now let's see the first function of marketing. Exchanging में पहला function क्या होता है? Now gathering and analyzing market information. The one of the very important function of marketer is what? To gather and analyze market information, यानी market के information को gather करना, collect करना और उस information को analyze करना. So this is basically called as a necessary point. Why? Because we need to identify what kind of need a customer is having. Then according to the identification of need into a market of a customer, we need to take out lots of decision, which is basically a main point for the successful of any marketing for any product and services. Now the first thing in your marketing process, यानी marketing process में सबसे पहला काम क्या करना होता है marketer को? That he need to gather the and analyze the market information. Market information का मतलब हो गया कि customer की need और उसकी identity को, उसके identification को identify करना. Means the marketer has to identify that what kind of demand, what kind of need a customer is having. Once that is identified, after that he need to analyze it. उसको analyze करना है that do we really need to fill that need or how we will be able to fill out it. So that is the first function of marketing, that is gathered करना और analyze करना market की information को. Now, this is also called as important for making an analysis of the available opportunity and threat as well as strength and weakness of the organization and help in deciding what opportunity can best be pursued by him. Now, this we have done in planning process also, that if same thing we are repeating here also, that by the help of gathering the information, यानी मार्केट की इन्फॉर्मेशन गैदर करके मार्केट को एक एडवांटेज और ये मिलता है दैट मार्केटर इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इनटू अ मार्केट, यानी मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसके लिए अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, और किस तरह के थ्रेट्स हैं, यानी किस तरह के थ्रेट हैं जो उसको फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट ही कैन एबल टू मेक आउट हिज स्ट्रैटेजीज, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, अपनी स्ट्रैटेजीज को बना सकता है. सो फर्स्ट फंक्शन टू गैदर एंड एनालाइज मार्केट इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज मार्केटिंग प्लानिंग. वंस द नीड एंड कंज्यूमर इज गैदर्ड, यानी कंज्यूमर की जो नीड है, उसकी जो डिमांड है, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है, उस इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस कर लिया है. मार्केट में हमने ये भी एनालिसिस कर लिया दैट हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या हमारे लिए थ्रेट हैं जो फ्यूचर में हमें फेस करने पड़ेंगे. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव मेक द स्ट्रैटेजीज ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट थिंग इज मार्केटिंग प्लानिंग. Means marketing planning basically means where we need to work out in an area. A marketer is to develop appropriate marketing planning so that the marketing objective or organization can be achieved. Now every firm has certain objective. Now with keeping in mind the need and the demand of a customer and the objective of a firm, now we need to make out the marketing planning. हमें marketing planning बनानी पड़ेंगी, and that is basically say that how we will be able to achieve our objective and how we will be able to satisfy the consumer. Now next is product designing and development. Now this is very important term, especially in this modern area. Is basically say that marketing activity or decision area relate to product designing and development also. Now the design of product contribute to marketing the product, making the product attractive to the largest customer. Now if we say about today customer is not only requiring or needing or identifying the product or the quality, they also go through about the packaging, they also go through about the designing of the product, right? So as a firm it become very challenge for us that we need to develop a product with quality also, but with that we also need to design a product in such a way so that it can improve the performance of a product and also give a competitive advantage to the market. Now next is standardization and grading. Now standardization basically say that giving a predetermined specification, यानी पहले से ही डिसाइड करके रखना कि एक बेंचमार्क दे देना अपने प्रोडक्ट को कि हमें इस प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक मैनर में डेवलप करना है. इट बेसिकली मीन्स कि हमने पहले से ही वी हैव ऑलरेडी प्लान दैट दिस विल बी अ स्पेसिफिक बेंचमार्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट. So that predetermined specification can be able to understand by standardization. So we can say that standardization refers to producing goods of predetermined specification which help in achieving uniformity and consistency in the output, right?
एंड द सेकेंड से ग्रेडिंग. ग्रेडिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग द प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाइड करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग बोलते हैं. राइट नाउ if we say that standardization is basically where we are predetermining that this is the specification of a product, यानी ये प्रोडक्ट हमें इस तरह से बनाना है, तो हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड करके रखा हुआ उसके लिए. that whole process will be called as standardization. And why we decide the standardization of a product, so that we will be able to know the uniformity of a product, यानी हमारा प्रोडक्ट जितने भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टैंडर्ड के अंदर डेवलप करें वो सारे क्या हो, यूनिफॉर्म मैनर में हो, एक ही मैनर में हो, सो दैट वी कैन ऑल्सो चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ आर आउटपुट. हम अपने आउटपुट की कंसिस्टेंसी को चेक कर सकें एज अ फॉर्म ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. राइट नाउ द अनदर बेसिकली से ग्रेडिंग. Grading is very important to the marketing function because it basically a process where we dividing our product into a group, यानी प्रोडक्ट को जब अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. एंड वाई वी आर डिवाइडिंग दिस, बेसिकली ग्रेडिंग इज नेसेसरी सो दैट द प्रोडक्ट विच आर नॉट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन वी विल बी एबल टू गो थ्रू विद ए क्वालिटी चेकिंग. यानी राइट यानी ग्रेडिंग क्या करता है, बेसिकली इंश्योर करता है दैट जो गुड है वो किस क्वालिटी को बिलोंग कर रहा है. We all know that grade 1, grade 2, grade 3. So grade 1 is written in the product. We know that the product is having a proper standardization product, एक proper benchmark के अंदर produce हुआ है और एक अच्छी quality का product है. grade 2 product basically यानी grade 1 से comparison में the product quality will be little bit down. So this is